Hello students, you are watching Kasyap tutorial and I am Prabhakar Acharya. Today I will discuss about the board paper of Sanskrit Composite of the year 2022. So the last year's paper is this, and this is composite paper and it is 40 marks, you can see here. And once again, before starting the paper discussion, I just tell you, go through the question paper. The instructions are written, you must read instruction. So सूचना लिखा होता है वो जरूर पढ़ना चाहिए and उसको समझना चाहिए. What instructions are given and what is expected by the examiner while writing the answers. So first is सूचना अनुसारम कृति गुरुता. If you will see सूचना अनुसारम आकृतयः आरेखितव्या. As per instructions, the आकृतिया means the diagram or picture should be drawn. आरेखितव्या. आकृति नाम आरेखनम मसी लेखन्या कर्तव्यम. The आकृति means the diagram or the picture should be drawn with the pen. मसी means pen. pen से draw करना है. Then सर्वासु कृतिषु वाक्यानां पुनर्लेखनम आवश्यकम. Means rewriting the sentences are compulsory. While writing fill in the blanks or वाक्यम सत्यम असत्यम etc. तो वहाँ पे वाक्य वापस लिखना है. That is expected. लेखनम सुवाच्यम स्पष्टम and लेखन नियमानुसारम च भवेत्. Your writing should be clear. लेखनम सुवाच्यम, that should be read. आपका writing पढ़ने योग्य होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. स्पष्टम इज क्लियर होना चाहिए. एंड लेखन नियमानुसार एज पर रूल्स ऑफ ग्रामर, स्पेशली संस्कृत ग्रामर बेस्ड. So these are expected by the examiner from students. So first we'll discuss see this of 40 marks paper. So in this first video we'll discuss about the Prathama Vibhaga Sugam Sanskritam. So Prathama Vibhaga is of 6 marks and this is from Chitrapad course. If you have seen the starting page of textbook, there is Chitrapad course, so this question is from there. The numbers and time, so ये यहाँ से होता है. So go through the question paper. See the first question is written चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखत. By seeing the picture, write the name in Sanskrit. नामानि लिखत, that is not instructed in which language, but you have to write in Sanskrit and as per spelling given in your textbook. Whether it is composite or entire, the spellings are given in the textbook. That is expected. You should write in such spellings. So what is said here? चतुर्थः त्रीणि. So any 3 out of 4. So 4 में से कोई 3 लिखना है. It is of 3 marks. So each question, each word answer will be of 1 mark. And I suggest you write all 4 answers. चारों के चारों लिखना चाहिए. But write first 3 which are correct, where you are confident that these 3 answers I know. And write it properly. So first one is, you see the picture and I show you answer here. Uttaram. First one is Smruti Shalaga, pen drive. Smruti Shalaga. So ये spelling है और ऐसे ही clearly लिखना चाहिए. No overwriting, no cancellation. Write clearly. Uttaram Smruti Shalaga is first. Second one is shirt, and shirt is called in Sanskrit yutakam. U की मात्रा first, yutakam, and ma will be halant. It is given in your textbooks. If you check that, so Smruti Shalaga first, second is yutakam, that is shirt. Third one is, you will see the picture, it is roti. Roti. So it's a roti is called in Sanskrit parpat. Sorry, it is not roti. It is papad. So पापड़ is called in Sanskrit परपटम. पापड़ को संस्कृत में परपटम कहते हैं. Because रोटी में क्या होता है, वो फोल्ड कर किया है, 3 फोल्ड करके टेक्स्ट बुक में दिया है. So because in the paper that will be in the black and white only. So if you go through the textbook you come to know कि ये क्या है, उसी तरह का पिक्चर डालेंगे. So the third one is परपटम and the fourth one is a boy or a man is finding with the help of glass, that is a magnifying glass. So it is examine. So parikshate, examine is called parikshate. See the spelling, parikshate, badi की मात्रा. So spelling check करो और correctly लिखो and write clearly. Just write first word in one line,
then leave a line, then write Yuthikam, or you can write continuously, but it should be clear. So this is first. Now second question is संख्याः means part 1 का प्रथमा विभाग का second number है. It is A. So it is called संख्याः अक्षरैः अंकैः लिखता. Write the numbers in a word or in a digit. संख्या को अक्षर में मीन्स वर्ड में लिखो या फिर डिजिट में लिखो, नंबर में लिखो. इट डिपेंड्स कि इफ द संख्या इज रिटन इन वर्ड देन यू हैव टू राइट इन digit. If it is in digit, then you have to write in Sanskrit word. So again, trita dve, so any 2 out of 3, any 2 out of 3, but again I suggest you write all 3 words, all 3 answers. So panchashiti, first one is, it is of 2 marks. So panchashiti, पंच अशीति, तो अशीति पहले आएगा और पंच बाद में. जस्ट इट इज कॉल्ड 85. सो 85 यू कैन सी हियर इट इज रिटन 85. जो अगर सपोज एक से ज़्यादा नंबर है तो संस्कृत का रूल्स होता है संस्कृत में, खासकर 2 और 3 डिजिट वाला नंबर्स, तो जो पहला लिखा हो तो वो लास्ट में जाता है. तो पंच और अशीति, सो दैट इज 85. अशीति मीन्स 80 एंड पंच मीन्स 5. सो 85 एंड इट शुड बी राइट दिस वे इन देवनागरी लिपि. Second one is 14, that is चतुर्दश. See the spelling चतुर्दश, चतुर. रफार जब भी आएगा तो नेक्स्ट वर्ड पे जाता है, और अनुस्वार जब भी आता है तो प्रीवियस लेटर पे आता है. तो चतुर के बाद में र प्रोनाउंस हो रहा है तो द के ऊपर गया चतुर्दश. एंड दिस इज चतुर्दश, नॉट चतुर्दश. विसर्ग नहीं आएगा, चतुर्दश. एंड द थर्ड वन इज त्रिंशत. त्रिंशत इज कॉल्ड 30. You will see Trinshat is called 30. It is here. So 30, this is the answer. 30 Trinshat. The ta will be halan, or 30. This is the answer of A. Sankhya Akshare Ankahi Likhata. Again, you can see it is clearly mentioned Uttaram. Now come to third. Prathama Vibhaga. Third question is Samay Stambha Melanam Kurutam. Match the time with the digit. सो इसको मैच करने में हमें ऐसे मैच नहीं करना है. आई एम शोइंग, डोंट मैच लाइक दिस वे कि आपने ये लाइन ड्रॉ करके किया. सपोज वंस यू आर राइटिंग 1 2 1 और 1 लाइक दिस वे, यू राइट इन अ कंप्लीट सेंटेंस जस्ट लाइक आई हैव रिटन हियर, जैसे मैंने लिखा है. सी दिस पादोन षड्वादनम. पादोन मीन्स 15 मिनट्स लेस, 15 मिनट कम. एंड किस में कम, तो षड्वादनम इन 6 o'clock, 15 मिनट कम इन 6 o'clock. सो दैट इज 5:45. सो इट इज हियर. सो सी पादोन षड्वादनम, इट इज 5:45, 15 मिनट कम है 6 o'clock में. देन सप्तवादनम, दैट इज वेरी सिंपल, मीन्स सप्तवादनम मीन्स 7 o'clock. सो दिस इज द आंसर ऑफ ई समय स्तंभ मेलनम कुरुता. It was Prathama Vibhaga. So it is first video of composite Sanskrit. Now second video will see the Dvitiya Vibhaga, that is Gadyam, based on the story or conversation questions. So keep on watching, do writing practice, and revise the chapters again and again. So correct the spellings and you get good marks. So thank you for watching this video. Very soon I will upload second video of this board paper 2022.